Okay, so we can start. So minus h bar over iota partial c m t over partial t. So, and integral psi n star zero into psi m 0 d tau is equal to integral psi n psi n star. Oh my god, ये क्यों आता है? 0 h with the superscript 1 and psi 1 with the superscript 0 and d tau. So let us put m is equal to n. Then we have minus h bar over iota partial c n t over partial t is equal to integral psi n and h with the superscript 1 and psi 1 with the superscript 0 and d tau. So this is equation number 6. अच्छा, यहाँ पे the summation sign has been removed because we have considered a particular value for m. Okay. And now the wave function psi, which is time dependent, is equal to the time independent amplitude functions. So okay, so we can write psi n with the superscript 0 is equal to psi 0 n with the superscript 0 e raised to minus iota e n t over h bar. And similarly, okay, so similarly we can write psi n 0 is equal to psi 0 n e raised to plus iota e n t over h bar, and psi 1 0 is equal to psi 0 1 with the superscript 0 e raised to minus iota e1 t over
h bar. ठीक हो गया? So these are known as equation number 7. Okay. Can we erase the board? Yes, ma'am. कर दूं ना? Okay. कर दी मैम. Okay. Okay. So let us substitute these values. Within the integral in equation number 6. So we will get minus h bar over iota over partial t is equal to e raised to minus iota, and we can take this common, and we have e1 minus en into t over h bar. And here we have 0n with the superscript 0, h with the superscript 1, and 0, 1 with the superscript 0. So this is d top. So now this is constant with respect to time, right? Okay. This is equation number 8. Now let us assume that the integral part of the equation does not depend upon time. So they have therefore integrating we get minus h bar over iota cn 0 to t is equal to e raised to minus iota e1 minus en into t over h bar divided by minus iota over h bar e1 minus en, and this is 0 to t, and we have this h superscript 1 and psi 0, 1 with the superscript 0. So this then becomes minus h bar over iota cn t is equal to e raised to minus iota
E1 minus En t over h bar minus 1 divided by E1 minus En minus h bar over iota into integral psi 0 n with the superscript 0, h with the superscript 1, and psi 0 1 with the superscript 0. Okay. Okay, can I erase this now? मैम एक मिनट. अब ठीक है? यस मैम. Okay. मैम ये लास्ट 2 जो इक्वेशंस आपने लिखी हैं इनमें इंटीग्रेशन के बाद डी टो नहीं आएगा दोनों के एंड पे? होगा. Okay. Okay. So okay. So we can write CNT is equal to e raised to minus iota E1 minus En t over h bar minus 1 divided by E1 minus En. And this is integral psi 0 n with the superscript 0 and h with the superscript 1 and psi 0 1 with the superscript 0. So this is equation number 9. So मैम इक्वेशन के एंड पे डिफरेंशियल नहीं आएगा डी टो जो हम लिख रहे होते हैं? ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है ना. तो वो हमने लास्ट 2 इक्वेशंस में मैंने लिखा वहां पे भी आएगा ना इसके इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने? ठीक है. ठीक है. अच्छा. So we put back the values of psi 0 n and psi 0 1 within the integral and combining the exponential terms within and out of the integral, then we get
Cn t is equal to 1 minus e raised to iota e1 minus en into t over h bar over 1 e1 minus en integral psi n star 0 h superscript 1 and psi n superscript 0 yellow. Okay. ओके अब मिटा दें इसको हाँ जी मिटाएं अब इसको हेलो मिटा दे मैम ओके okay so thus the probability from state 1 1 to the nth state at an instant t is given as rho n is equal to Cn star dependent on t into Cnt and this is equal to Cn dependent on t modulus square. So this is equal to 1 minus e raised to iota e1 minus en into t over h bar and 1 minus e raised to minus iota into e1 minus en into t divided by h bar divided by e1 minus en squared and this whole multiplied by hn1 squared where hn1 superscript 1 is equal to the integral that we had. So this is h1 psi 1
and theta. This is called matrix elements of perturbation. Okay, now we need to erase. कर दे मैम. ठीक है. Yes. So we have rho n t is equal to plus exponential minus iota e1 minus en into t over h bar over e1 minus en square multiplied by so writing this in terms of cosine, we can say 2 cos e1 minus en t slash h bar divided by e1 minus en squared multiplied by hn1 with the superscript 1 modulus squared. So therefore, this is equal to 2 into 1 minus cosine of e1 minus en into t over h bar divided by e1 minus en squared into hn1 superscript 1 modulus and square. Okay, and finally we can say rho n t is equal to 4 sine squared e1 minus en into t divided by 2h bar over e1 minus en squared multiplied by h and 1 superscript 1 modulus square. मैम ये लास्ट स्टेप कैसे है ये बता दीजिए. ट्रिग्नोमेट्री वो आइडेंटिटी लगाइए, ठीक है ना. क्या भला 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2. ठीक है. ओके हाँ मैम पता चल गया. ठीक है मैम. ओके. हाँ. Okay,
This was the case for the time dependent perturbation. ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम कर सकते हैं. ओके, मैम प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत ज्यादा करा देगा आपने. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यस मैम. ये कौन बोल रहा है? तो सारे एग्री करते हैं, नहीं तो अगर नहीं करते तो करवा. जी मैम नेक्स्ट क्लास में करवा दीजिएगा. अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी लंबा है, वो यस मैम बहुत ज्यादा हो गया. खत्म नहीं होगा. ओके चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तब तक फिर यू टेक केयर. मैम असाइनमेंट अपडेट कर दें. जी बेटा. यस मैम उस पर भी टाइम, हाँ, उस पर भी असाइनमेंट टाइम लगना करें. असाइनमेंट मैंने बना ली है, उसको मैंने अब टाइप करना है. सो वो टाइप करके फिर अपलोड कर. ठीक है, ओके मैम. ओके टेक केयर. ओके मैम. मैम क्या मतलब ग्रुप्स में होगी कि इंडिविजुअली सबके डिफरेंट क्वेश्चन हैं? इंडिविजुअल करो अपना काम. ठीक है, ओके मैम. ओके टेक केयर.